दोस्तों स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। और आज मैट्रिक्स फाइट नाइट 10 का हम रिव्यू करने वाले हैं। मैट्रिक्स फाइट नाइट कल पलाजो वर्साचे दुबई में कंक्लूड हो चुका है। एक बहुत ही बढ़िया फाइट नाइट हमें देखने को मिली है। और आज और इस एमएफएन 10 में 4 नए चैंपियन हमें मिले हैं, जिसमें से 3 इंडियन हैं। तो बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा। इस पूरे इवेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और एज यूजुअल हमारे साथ मेरे दोस्त डॉनी बोन्स जुड़े हुए हैं। डॉनी बोन्स वन डोजो के लिए लिखते हैं। ही इज अ वेरी गुड कॉलमनिस्ट एंड यू कैन शो योर सपोर्ट टू बोथ हिम एंड वन डोजो। तो डॉनी, हाउ आर यू मैन? Yes. Hello and good afternoon, everyone. This is a हाउस द reaction जोश? video. Hi, sir. Very high. After what happened last night and all the fights that took place, man, it was really crazy. I wanted to do this show last night itself, but I was quite busy after the event. I was just finishing off writing some of the articles, so I was like, ah, man, I can't do this anymore. नहीं तो मेरी आंखें they were gonna fall off from my eyes, and I wanted to wake up early because I wanted to watch the one championship fights. So I couldn't watch the entire card, but I watched Rotang's fight and Christian Lee's fight. So yeah, so both of them won. So congratulations to them. And They were good fights. congratulations to all the Yeah, MFN winners. yeah, and we're not. But yeah, you're right. Exactly. We're not gonna talk about one FC right now. We're gonna talk about MFN 10, which just concluded last night. And you're right, bro. I mean, each and every fight, they were really exciting, and almost every fight in that particular card they had consequences, like which will be which will be seen in the future, because whoever the winners were last night in their respective fights, they have made they have placed their respective names in a conversation which the for which the promoters and the matchmakers will be having in the Definitely. next MFN card, and when the title holders will be doing their will be making the title defenses. So yeah, I can't wait to start this. So I think we should start it off with the fight that opened the card, bro. Let's start off बिफोर with यू Puja. स्टार्ट बिफोर यू स्टार्ट गाइस, Let's अगर जो भी ये लोग देख रहे हैं, हेड ओवर टू वन डोजो यार। जाके पढ़ो, इनके आर्टिकल्स पढ़ो आप। रात भर उठ के इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं। एंड yes, अगर आपने मैच नहीं देखा है तो आप जाके हॉटस्टार पे जरूर मैच देखें और इनके आर्टिकल्स आके पढ़ें यार। एंड yes, on that note, first of all, let me give kudos to Coach Allen and the whole MFN team. होल एमएफएन टीम, क्या जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे ये इवेंट हुआ है। एक बहुत ही बढ़िया, इंडिया का नाम एमएमए में बहुत ऊंचा कर दिया इस एमएफएन ने। एंड कल इवेंट में आपको दिखे होंगे सुपरस्टार्स से लेकर स्टार्स की पूरी रेड कारपेट बिछा हुआ था। पूरा दुबई वहां पे था। नॉट ओनली इंडियन कंटिजेंट बट ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग वहां पे देखने के लिए आए थे, फ्रॉम किर्गिस्तान टू यूएस टू ऑल दिस कंट्रीज। तो ऑन दैट नोट, जैसा कि मेरे दोस्त टोनी ने कहा, शुरुआत करेंगे पहली फाइट से, जो थी स्ट्रॉवेट टाइटल के लिए पूजा तोमर और बी न्यूएन के बीच में। डॉनी, योर फर्स्ट कमेंट ऑन दैट। yes. So I want to say that if for those who don't know, this is Puja and B's second meeting. So they fought earlier in one championship. It was a mixed Muay Thai rules fight, right? So yeah, Yes. it was a very good fight. That fight, according to me, it lived to my expectations. They eventually, like, they both started feeling themselves out and slowly and taking their time. But you know, uh, like as the fight progressed till the end of the fight, there was pure action, and I'm so happy for Puja. She brought the title. I mean, she kept the title where it belongs, in our country itself. So, and she defeated a really gamed opponent in being one. And I think that was B's first loss by TKO, if I'm not mistaken, right? Not sure of that stat.
I think I'm gonna have to check it, but yeah, I feel like that was Maybe B's I'll do first. that. Yeah, why don't you do it? Just check, bro. Just check. I Yeah, think that was B's first loss by TKO. Killer B. But what a beautiful name she has. Kill her B. Not Killer B. Kill her B. That's It's the Killer B, right? Kill her B. Kill her B. Kill KILLHER. Kill her B. What an amazing, बहुत ही बढ़िया नाम. आई थिंक इंडियन एमएमए में अगर हम ध्रुव चौधरी साइको को या फिर राहुल थापा, शाउट आउट टू राहुल थापा, ग्रीक गॉड ऑफ एमएमए, और इसके अलावा आई थिंक कैप्टन क्रेजी इज वन नेम दैट कम्स टू माइंड. तो एक बहुत ही बढ़िया एलियस है इनका. क्राटोस इज वन. शाउट आउट टू उलूमी भाई. एंड अगर मैं इस फाइट के बारे में बोलूं तो आई थिंक राउंड शुरू हुआ एक जो वुशु बैकग्राउंड इन्होंने दिखाया है पूजा ने पहले राउंड से. पुश किक्स लगा रही हैं, हाई किक्स, लो किक्स लगा रही हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आया. एंड आई थिंक फर्स्ट राउंड के एंड में एक टेक डाउन भी लिया था बी ने. ज्यादा Yeah, कुछ हुआ yeah, नहीं yeah. उसमें, एक टेक डाउन लेने के बाद कुछ ज्यादा हुआ नहीं. सेकंड राउंड में दोबारा वही कहानी रिपीट होने लगी. एक जो मुई थाई में हम पहले देख रहे थे, दोनों कहते हैं कि स्विंगिंग फॉर द फेंसेस चल रहा था स्टार्टिंग में. और एक बार जब पूजा का पंच कनेक्ट हुआ और बी थोड़ा सा लड़खड़ा गई उस पंच के साथ. और Hmm. व्हेन यू आर ऑन वॉबली लेग्स व्हाट कैन यू डू. और Yeah, उसके बाद yeah, गो go अहेड. on, go on, go on. Go on, और go on. उसके बाद पूजा ने फाइट को फिनिश किया, एक टीकेओ फिनिश लिया. एंड एक सरप्राइजिंग चीज बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखी होगी, गैमएफ रूल्स की बात चली कमेंट्री बॉक्स में. एंड थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी. वैसे गैमएफ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर फाइट का एक कंट्रोवर्शियल स्टॉपेज होता है तो केज के बाहर जो रेफरीज रहते हैं वो देखते हैं उस फाइट को और रीस्टार्ट करते हैं इफ नीडेड. लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी. और पहली इनॉग्रल स्ट्रॉवेट चैंपियन एमएफएन की, इंडिया की, मिस पूजा तोमर. कुडोस टू यू. Yeah, yeah, and exactly what I felt yesterday that Puja did well. She was right from the get go. I mean, though both fighters like how they fought throughout the whole fight, it was much more calculated. And despite B getting the takedowns and all that, but Puja, I feel like she was using her range really well, and she was using Good. her jab also really well. So yeah, I think how she managed to do that, and I give props to her team, to her coach, and who prepared her for this fight. Like they really came up with a solid game plan. Like okay, Zuma B Fight had Club. her moments, B had her moments in the fight, but whenever Puja connected, she really connected well, and whatever shots that she landed, they were having an effect on B. So I mean, she even did well in the ground. I think in the second round, like B, like she got the takedown, but and despite B trying her best to establish control, Puja really defended well, and even the scrambles also she did well. But yeah, that one proper punch, that was. I mean, we always knew. I mean, we've seen, right? Puja always had power in her hands, and yeah, that one shot, man, that one shot which led to the TKO. That was it. That was it. I And mean, it was a bit surprising. I mean, I'll be honest. I'm not that familiar with Gamma rules, but yeah, I feel like those rules, they are good. Like MF, they help. They help to keep the sport much more fairer. But yeah, yesterday is like, as soon as that punch landed and the ref call of the fight, I was like, yeah, this fight is done. But yeah, I was like, okay, let's see what these rules. I mean, how will these rules come into play in this particular fight? But yeah, they were fair, and I mean, and they little bit of protection never hurts. exactly, yeah, yeah, हम फुटबॉल में, क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम है, फुटबॉल में रिव्यू सिस्टम है. तो दैट इज अमेजिंग टू सी इन गैमएफ. एंड कुडोस टू पूजा तोमर, आवर फर्स्ट yeah. फीमेल चैंप. एंड डेफिनेटली Congratulations. एमएफएन 11 और 12 में हम उन्हें दोबारा ये बेल्ट डिफेंड करते हुए देखेंगे, इफ नॉट द एटम वेट टाइटल, बिकॉज एटम वेट टाइटल के लिए वो कॉल आउट कर चुकी हैं ऑलरेडी एलन सर को.
तो देखना Yeah, दिलचस्प yeah. होगा, पहले एटमवेट उन्हें मिलता है या फिर वो इस बेल्ट को डिफेंड करती हैं। All right then, bro. So now we यस, shall move on to Likharu versus Djordje. This was a fight that I was actually looking forward to. सेम हियर, So सेम please, हियर। you open the statements. I wanna hear डेफिनेटली, what it डेफिनेटली। एंड बोथ दीज गाइस, जैसा कि हमने प्रीव्यू शो में कहा था, अमेजिंग जी जित्सु प्रैक्टिशनर्स हैं। 10th प्लैनेट is. से आते हैं जोर्जे स्टोयानोविच, सर्बिया के फाइटर हैं। पुण्यजीत लिखारू बाली एमएमए में आजकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले क्रॉसफिट में क्रॉस ट्रेन में ट्रेन कर रहे थे अंडर सिद्धार्थ सिंह। वी ऑल नो सिद्धार्थ सिंह, शाउट आउट टू हिम। कितने बढ़िया जिजित्सु का लेवल है उनका, इंडिया के पहले पर्पल बेल्ट। तो दोनों Mm. खतरनाक जिजित्सु फाइटर, लेकिन फाइट शुरू होती है और जॉर्जे जो अपने बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस लेके आते हैं, माय गॉड, स्पेक्टाकुलर। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ उनके कॉम्बिनेशंस देखकर। एंड लिखारू, वाओ, फ्लॉयड मेवेदर डिफेंस, मैन। डॉनी, Exactly. I was gonna say डॉनी, that. I was you gonna should say that comment on this. he You was should he was comment very on very the, yeah, yeah, he go was ahead. very calm. He was very calm in the exchange, and you know, as much as Dorje, he was attacking him and throwing in the combinations and the leg kicks and what not shit that Dorje was, pulling out in the cage. Likharu was still so calm. Like he didn't even budge. Whenever he saw his chances, whenever he saw his chances, he took them. He didn't lose his mind in the middle of the fight, despite all the volume that was coming at him. And yeah, man, throughout the whole fight, and even after the fight, in the post fight speech that he gave, you could see that the guy is a very calm dude. So wow, that's crazy. And I mean, you have to give props to Djordje's pace, but you have to also give props to Likharu for the kind of composure that he showed, especially in a fight like that. And Definitely. And I the was ground really, game, and the ground game, yeah. because आई थिंक फर्स्ट राउंड के एंड में जब टेक डाउन लिया लिखारू ने, तो Mm, मुझे लगा सेकंड राउंड में डेफिनेटली पुण्यजीत टेक डाउन हेवी गेम रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉर्जे ने उनका टेक डाउन लिया, एंड इस टेक डाउन को yeah. रिवर्स करते हुए कितना बढ़िया ग्राउंड एंड पाउंड करा। एंड वन थिंग टू नोट, इस ग्राउंड एंड पाउंड से पहले एक लो ब्लो अनफॉर्चुनेट हुआ था Mm, जॉर्जे को, एंड यही आई थिंक मेजर रीजन बना इस फाइट से विड्रॉल का, इस फाइट के स्टॉप होने का। हालांकि ज्यादा डैमेज किया फाइट के एंड में, सेकंड राउंड के एंड में पुण्यजीत ने, लेकिन स्टिल वो लो ब्लो आई थिंक थोड़ा इफेक्ट कर गया। एंड आई थिंक राइटली राइटली पुण्यजीत ने भी कहा कि ऐसी ये जीत उतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी, बट स्टिल अ विन इज अ विन। yeah, exactly. Yeah, exactly. But that fight, I mean, I mean, when I see a fight like that, right? There's only like one particular sentence that comes to mind. Okay, a clash between the relentless and the indomitable. Dorji was relentless. Likharu, he was there. He was ready. He was ready to take it and dish it out. He was like he he, he was not gonna go out of his way, to try anything crazy. But you could tell. I mean, okay, I'm not him, but I mean, I'm just trying to understand from the way that he fought. You could tell that the guy had a particular game plan and he stuck to it. I mean, I can only ascertain what I say until and unless I speak to him or ask him what was going on through your mind at that particular time. आगे बढ़े अगर इस फाइट कार्ड में, तो उसके बाद हमें आर्सेनबा ओस्कुम और दिनेश नाओरेम की फाइट देखने को मिली। Oh, सुपर क्रैकर ऑफ अ फाइट जो हमें देखने को मिली, एक्शन पैक्ड फाइट। आर्सेनबा mm, ने जो शुरुआत की फाइट की, एंड बिफोर दैट मैं बताना चाहूंगा, आर्सेनबा ओस्कुम गामा नेशनल्स 2021 में फाइट कर चुके हैं ये दोनों सेमीफाइनल्स में, जिसमें दिनेश नाओरेम ने एक विक्ट्री ली थी अगेंस्ट आर्सेनबा। सिमिलर चीज हमें yeah. यहाँ देखने को मिली। डॉनी, Yeah, this is another of those fights that I was looking forward to. Like both these guys are fairly green in the pro circuit. So yesterday was Dinesh's first pro fight, right? And यस, Arsenba's second pro fight.
And man, the way that Arsenba started, it was just crazy. Like he was throwing his hands and feet and whatnot, man. It was like you watch these movies, right? Like what's that movie? That Boyka movie. Undisputed. Exactly. It was like the way how he was fighting in the first round. It was like, wow, man, this is like crazy shit like that. But he was picking his shots. He was so clever. I think he even, yeah, yeah. No, I don't think. I mean, I remember he even got a knockdown. But that Dinesh got right back up, and in the first round, I think that entire round it went to Arsenba. But second round, man, Dinesh got to implement his wrestling, and as soon as he secured that takedown, it looked like, oh man, it was not going well for Arsenba because he was landing that ground pound, those bloody elbows. Jesus, and it's not like Arsenba was not doing anything From bottom. from the bottom, but yeah, like when a guy is that skilled in, I mean, he's very, very well versed in his basics, in his bread and butter. You can tell wrestling is Dinesh's bread and butter, and he was really using it well. And I feel bad that the fight ended the way, like, I mean, ended like that. But I mean, I don't really know why the fight had to end like that. And yeah, congratulations to Dinesh and his win, and I really felt happy for him. He won yesterday, and whatever he's wanted throughout his whole life, he got he Definitely, got it. definitely. I hope he'll do well for the rest of his career. So yeah, man. And But I feel bad for Arsenba as well, because I definitely, mean, he's one of the most amazing prospects that I've seen in a very long time. You remember, right? His first fight yesterday definitely. also, his leg kicks, they were crazy. I mean, his first fight, he was जोजे chopping. आल्डो those kicks are Jose Aldo की याद दिलाता है आपको. वो नॉक Exactly, डाउन, bro. वो स्पिनिंग. एंड आई थिंक जोजे आल्डो, अगर मैं ना बोलूं तो मिशेल पहेरा, अगर किसी ने यूएफसी में देखा है किसी ने मिशेल पहेरा को, दैट गाय Exactly. वेल्टरवेट डिवीजन में, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स. Yeah. बिकॉज बिल्कुल मिशेल पहेरा की तरह स्पिनिंग अटैक जो करते हैं आर्सेनबा, अमेजिंग मैन, Mhm. कुडोस टू यू ब्रो. Yeah, and remember before the end of the first round that he was doing what Yes. the hell was that when he एंड threw? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज डन इट. अपनी पिछली फाइट में भी Yeah. सेकंड राउंड के एंड होने पर उन्होंने सेम चीज करी थी. आई थिंक जैसे ही उन्हें रेफरी की आवाज आती है 10 सेकंड, उनके दिमाग में आया था कि अब मैंने अपना स्पिनिंग अटैक शुरू करना है. दैट Yeah. आई एम नॉट श्योर व्हाट टू कॉल इट, क्या बोलते हैं इस किक को, बट व्हाटएवर दैट किक इज, अमेजिंग मैन. आर्सेम्बा, कुडोस टू यू. I know. लेकिन एंड Damn. अगर हम दिनेश की बात करें तो आप उनका पोस्ट एंड अगर आपने पोस्ट फाइट स्पीच देखी होगी, उससे जस्ट पहले सुप्लेक्स सिटी, उन्होंने अपने जो कॉर्नर मैंने चुंगरेन कोरेन को एक सुप्लेक्स किया, एक बिल्कुल Yeah. रेसलिंग स्टाइल. आई थिंक व्हाट्स द नेम ऑफ द इंडियन रेसलर, आई फॉरगॉट. बजरंग पूनिया. Brock Lesnar. बजरंग पूनिया एस्क उन्होंने पूरा किया. पोस्ट फाइट स्पीच में एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट फाइट स्पीच थी. एंड विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर दिनेश एंड आर्सेनबा बोथ. Yeah. एंड And one more thing I'll add, okay, that Dinesh is very, very durable, bro. I mean, he was hit all over. I mean, left, right, center. दैट लेग वाज चॉप्ड Arsenal ऑफ ऑलमोst. kicked the crap out of his leg. Yeah, but that guy, he stood tall. He was like, "Bring it, bring it." Damn, that fight lived up. I mean, to me, I didn't like the way how it ended, but from what आई I've थिंक seen, कॉर्नर like, में आई थिंक कॉर्नर में उन्होंने कुछ सोच के ही फाइट से विड्रॉल किया होगा. आई थिंक द डैमेज वाज टू मच. आई बिलीव कहीं पे कुछ ज्यादा आंख के पास कट लग गया था. आई थिंक दैट माइट बी वन ऑफ yeah, द रीजन, बट व्हाटएवर द रीजन इज, कोच के को ज्यादा मालूम होगा. एंड द कॉर्नर
I'll just add this, okay? If that's the case, then I think his corner did a good job, because Arsenba, he's quite young, right? He's not even 23 or 24. He's not even peaked yet. And Yes. for a guy who's that young, like the coach, I feel he did a good job, put taking him off the fight. It's okay if you take a loss. So what? It's not like we didn't enjoy your fight. We really, I mean, for me as a fan, as a fight fan, I really enjoyed that fight. And yeah, I felt bad, like, to see the fight end like that. But nevertheless, like, the coach knows better. And usually in MMA, coaches, they don't do that. But I'm glad that Coach Kremeli, he did that. Always his first priority, right? To protect the fighter, and he did that. And I give props to Coach Kremeli for doing that. And I hope like Asanba's injury is not that severe, and I hope he'll recover as soon as possible. So may I wish you a speedy recovery, Asanba. और इसके बाद हमारे पास फाइट थी देहरादून के म्यूटेंट एमएमए को रिप्रेजेंट करने वाले दिगंबर सिंह रावत और उनके ओपोनेंट रोनिन्स जिजित्सु में फाइट करने वाले आकिब अली के बीच। एंड व्हाट अ वॉर वी विटनेस्ड, अमेजिंग। आई थिंक इस फाइट में जो हाइट का एडवांटेज था दिगंबर का, वो थोड़ा सा डिमिनिश हुआ। एंड आई थिंक गेम प्लान भी शायद उस हिसाब से, आई एम नॉट श्योर क्या गेम प्लान था, बट कोचेस को ज्यादा मालूम होगा इसके बारे में ऑब्वियसली। लेकिन गेम प्लान आकिब का मुझे बहुत बढ़िया लगा, जिस हिसाब से वो लेग किक्स चेक कर रहे थे और जिस हिसाब से वो पेशेंट रह रहे थे। हालांकि पहले राउंड में उन्होंने कुछ किया नहीं, पहले Yeah, राउंड में yeah, कुछ yeah, देखने को मिला नहीं हमें आकिब की तरफ से। लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वो काउंटर कर रहे थे। वो yeah, जब दिगंबर उनको स्ट्राइक्स लगा रहे थे तो वो उन्हें डिफेंड करके आगे काउंटर कर रहे थे। आई थिंक ये काउंटरिंग का गेम था आकिब अली का। yeah, योर yeah, ओपनिंग कमेंट ऑन दिस? yeah. I'm sure you must be feeling very proud of your hometown boy right now, my friend. Right? प्राउड से प्राउड तो ऑब्वियसली होना ही है, लेकिन थोड़ा सा नेल बाइटिंग फाइट थी बहुत। तो एंड में Exactly. Yeah. जो स्प्लिट डिसीजन गया, आई थिंक आई वाज रियली हैप्पी दैट स्प्लिट डिसीजन वेंट आवर वे एंड दिगंबर को ये फाइट मिली। लेकिन Yeah. फाइट में जो पहले राउंड में जो कॉम्बिनेशंस लगाए, जो लेग किक्स लगाई थी, जो हेड किक्स लगाई थी, दैट वाज सुपर इंप्रेसिव फ्रॉम दिगंबर। एंड Yeah. कुडोस टू आकिब अली फॉर स्टैंडिंग टॉल इन द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड के Yeah. बाद थर्ड राउंड में आई थिंक थोड़ा सा अपने वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन उसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन ऑन द फीट काउंटरिंग में थोड़ा सक्सेस जरूर मिल रही थी आकिब अली को। I'll add one thing, okay? Yesterday the commentator said that Akib Ali went through a ring of fire, Agni Pariksha, right? To यस। to get to get into MFN. And yesterday, that first round, it was an Agni Pariksha for him. No doubt about that, because Digamber was using his reach and his leg kicks, and damn, he was using his stand-up game really, really well. Yeah. Akib was not doing much in the first round, but yeah, in the second and third round, he was doing well. And eventually, like, I feel like for a guy like Digambar, who comes from a place which is not that, I don't believe it's that warm in Dehradun, right? It's not even that humid, even in summer seasons. So he just goes there to a place which is extremely hot, and he's not even acclimatized. Maybe that is the reason why I feel like he gassed out later in the in the third round and all. So yeah, and kudos to Akib for withstanding that initial storm that Digamber was bringing. Well, he brought the fucking storm on him, man. But Akib Ali stood tall, and he showed us all why he deserved to be there, right? And and yeah, despite the loss, I don't think he should taking this loss to, like, okay, it stings. I'm sure it will sting, but I hope that he would be proud of himself for the kind of performance that he put up last night. And he mixed it up, especially in the second and third round. Like, he was using his striking and and his ground game and all that. So after after withstanding a first storm, I mean, after withstanding a storm like that, and then coming back strong in the later rounds, I myself, like, I really enjoyed that fight. And you know
And I want to congratulate Digamber also, because it was not just Akib who put up a spectacular display. It was Digamber as well, because it takes two to tango, right? And both of them, Yes. they did really well. They did really really well. I thoroughly enjoyed that fight. And what was that Digamber said? Like, is he coming back down to featherweight? मैं इसी आपके कमेंट का इसी बात पे आने वाला था कि व्हाट अ पैशनेट प्रोमो ही कट। आई थिंक आप अगर दिगंबर के पास कभी बैठेंगे तो आप ही इज नॉट अ मैन ऑफ टू मेनी वर्ड्स। आप उनके पास Hmm. बैठेंगे तो उनके आजू बाजू में अगर चार लोग हैं तो वो आपको सारी बातें सुनाएंगे, सारी बातें करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। Yeah. यू नो ही इज अ मैन शाय ऑफ वर्ड्स एंड प्रोमो कट कर रहे हैं वो वहां पे। सरप्राइज सरप्राइज, मैंने कहा ये मैग्रेगर कब से बन गया। एंड कल दिगंबर की फाइट मैंने अपने दोस्त के घर में, हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, हमने देखी फाइट। एंड इमीडिएटली आफ्टर अविजोस फाइट मैं सीधे म्यूटेंट एमएमए, बिकॉज मेरे फ्रेंड का घर और से मेरे घर के बीच में पड़ती है वो एकेडमी। मैं एकेडमी में गया, एकेडमी में लड़कों से ही पूछा, मैंने कहा इसने फेदरवेट बोला था ना, बट किसी को कोई आइडिया नहीं था उस चीज का, क्योंकि इतना शोर हो रहा था उनकी। उन्होंने बोला कि जैसे ही वो जीते हैं इतना शोर हो रहा था, किसी को सुनाई नहीं दिया क्या दिगंबर ने बोला। वो आज सुनेंगे वो लोग बैठ के। लेकिन उन्होंने सच में फेदरवेट बोला। आई वाज रियली सरप्राइज कि लाइटवेट डिवीजन का लड़का फेदरवेट डिवीजन में कॉल आउट कर रहा है। मे बी he's trying to get Sanjeet Budhwar into some kind of mix, maybe, Yeah. or maybe बल्कि आई थिंक उसकी जरूरत ना पड़े। अगर लाइट वेट डिवीजन में बेल्ट आ जाए तो मे बी ही, श्रीकांत, शेखर, these guys can fight it off on in lightweight division. Yeah. Yeah. But I don't know if Digamber, has he ever fought in featherweight before? Never. Never. So that is उनका quite एमेच्योर interesting. But करियर ही बहुत छोटा रहा है, एमेच्योर करियर ही बहुत छोटा रहा है उनका। okay, so yeah, let's see. We'll find out if he ever moves down to featherweight. But yeah, I mean, I'm sure there are plenty of interesting fights in featherweight for him. There are डेफिनेटली, एंड plenty आई of थिंक अगर फेदरवेट डिवीजन में जाते हैं दिगंबर, देन इट्स अ रियली रियली गुड मैचअप। व्हाई? बिकॉज uh, दिगंबर की हाइट का एडवांटेज जो मिलेगा फेदरवेट डिवीजन में, दैट इज अनपैरेलल। श्रीकांत शेखर की जो हाइट है लाइटवेट डिवीजन के लिए वो बहुत ज्यादा है। एंड आई थिंक ये फायदा मिलता है श्रीकांत को, यही फायदा दिगंबर को मिलेगा अगर वो फेदरवेट जाते हैं। हालांकि लाइटवेट में भी उन्हें फायदा मिल रहा है, लेकिन स्टिल जो फेदरवेट डिवीजन, आई थिंक ही कैन रूल दैट फेदरवेट डिवीजन फॉर way too long. I think so. yeah, I'm sure he can. But the thing is that the weight cuts, bro. The weight cut is gonna be a difficult one. But I believe, like, he can do it. we Only time will tell, right? By the time the next fight card comes up, we'll know what's what. Or maybe in a few days or a few months, we'll know what's what is really, I mean, what really are his plans. So, but if you get any sort of inside scoop within the coming days, so just let me know. इसके बाद हमारे पास फाइट थी नागालैंड टीसीए के अविजो लानामाई, और उनके अगेंस्ट थे दुष्यंत। एंड जैसा कि मैंने प्रीव्यू शो में कहा था कि अविजो का इतना बढ़िया गेम प्लान वो लेके आने वाले हैं, एंड रेसलिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस गेम में। एंड क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया गेम प्लान उन्होंने इम्पोज किया दुष्यंत के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुडोस टू दुष्यंत फॉर टेकिंग दिस फाइट। दुष्यंत, Exactly. दुष्यंत, आई सल्यूट यू मैन, कुडोस टू यू। आपने इतने एक हफ्ते के नोटिस में फाइट ली। आई नो आपका कार्डियो या फिर जो भी कहते हैं प्रिपरेशन उतनी बढ़िया नहीं रही होगी। होपफुली फ्यूचर में हमें वो देखने को मिलेगी। एंड लेकिन इसके बावजूद आपने फाइट एक्सेप्ट की, और आपने रेसलिंग करने की कोशिश की दुष्यंत ने, लेकिन उसको स्टफ किया आविजो ने बहुत अच्छे तरीके से। एंड बहुत जल्दी ये फाइट फिनिश हुई एक रियर नेकेड चोक सबमिशन से आविजो लानामाई की तरफ। Avizo yesterday. I'll be straight. I'll be straight. It's not like I'm can like being disrespectful towards Dushyant or no, but Avizo showed yesterday, man, that if you go unprepared against a guy like that, you're gonna get smoked. Avizo smoked him. Avizo smoked him on the feet. Simple. Can you tell me that I'm wrong? नो, Like his
his striking was so crisp. And yeah, of course, we know how, like, I mean, I'm not gonna say that I've watched so many clips of Dushyant and all that. I haven't done that. I've watched a few, and yeah, the guy, he's really, really good. He has a really, really good wrestling background, and of course, we saw yesterday Avizo. He was like, he didn't want to engage in that wrestling at all. But as soon as the fight went to the ground, Avizo used his grappling like really, really well and ended that fight really, really quick. So it was a really clean victory for Avizo, man. And I'm looking for, if that fight between Avizo and Manish ever happens, right? I'll be looking forward to that fight, bro. बट एज यूजुअल जैसी ही फाइट खत्म हुई, एक अगेन इट वाज नॉट अ वेरी पैशनेट प्रोमो, बट एज यूजुअल इंटरनेट पे मनीष महंता कॉल आउट कर रहे हैं. शाउट आउट टू मनीष महंता, व्हाट अ ग्रेट फाइटर. आईमा नेशनल्स पे अगर आपने देखा होगा, आपने जरूर देखा होगा, बल्कि देखा क्यों नहीं होगा, ही वाज वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द होल शो. आईमा नेशनल्स का जो पूरा शो हुआ, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला फेदरवेट डिवीजन में, एंड That's the होपफुली reason एमएफएन why, man, 11. he got the contract. That is the reason why. That guy, he's a flashy fighter and a really good kickboxer. He, he trains with one of my Manas. friends with Manas sir, and one of my friends back in Assam. So that gym is also producing some really, really good fighters, which we're going to see in the future. Shout out to Hillside MMA Khanapara and my friend David and his whole team over there, and to Dojang MMA with Manas sir and his whole team. So I wish you guys all the best, and I hope to see Manas in the next card as soon as possible. Really, really. Not Manas is one Manas of, sir. sorry, Manish. Manish. Shout out to you, Um, Manish. Yeah, Yesterday I heard in the commentary that he came from really, really humble from background. humble background, and he had a really, really tough life. So yesterday, I hope that yesterday it changed his life for him somehow, and I hope that whatever he made from yesterday, the amount of money and jitna bhi ho, I hope that will help him and his family, man, because Definitely. most of these fighters, they really have to struggle, bro. It's no joke. It's not just a financial struggle. It's a physical struggle, emotional struggle, mental struggle. And sometimes the reward is so less, but I hope whatever it is, right, jitna jitna bhi chota ho, I hope it changes his life, and it changes his life for the better, man. And you can see the guy was still in you can see the guy was still in good spirits even after the fight. You know, you have to I kudos to his spirits of sportsmanship. And I mean, I really, really, applaud that kind of attitude of his. And even after the fights, I saw him, he was happy, taking pictures, posting stuff on Instagram. I was like, this guy is a very jolly fellow. And I'm sure next time, I mean, I hope that he gets, to do a proper camp, and, we can see much more, I mean, a much more better performance from him in this next fight. So yeah. चलिए इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं, एंड इसके बाद हमारे पास फाइट थी क्लिंटन डी क्रूज और कुर्गी बॉय, और उनके सामने थे राइस मोहम्मद मूसा. बहुत ही फास्ट शुरुआत हुई, एक्सट्रीमली फास्ट शुरुआत हुई, एंड इतना फास्ट स्टार्ट बहुत दिनों के बाद देखने को मिला हमें. व्हाट अ फास्ट स्टार्ट वी हैड. एकदम से स्क्रैम्बल के लिए गए दोनों, एंड अगर आपने स्क्रैम्बल में देखा होगा, विद इन अ मिनट मैट पे इतना खून आ गया था जितना 12 फाइट के बाद हमें देखने को नहीं मिला. Musa just like both of them, they just went for it, man. And damn, Musa just landed a punch, and as soon as Musa landed the punch, Clinton, connects with. I mean, he
It was secures he secures the takedown, it and was not a damn, punch. It was a elbow. oh, was it an elbow? It was an elbow from sides. Yes. Yeah, okay. साइड कंट्रोल से, लेकिन बहुत ही विशियस एल्बो था। इतना और सीधे कान पे लगा उनके वो, एंड कान से इतना खून निकल रहा था। कमेंट्री बॉक्स में से सरप्राइज से इतने जल्दी कैसे खून निकल गया, 1 मिनट के अंदर ही इतना खून खून हो गया था। और उसके बाद Exactly. वो डार्स चोक जो उन्होंने लगाया, दैट इज अमेजिंग मैन, अमेजिंग। I thought that was an anaconda choke. Was it a बोथ आर dance सेम। choke? Okay. Really? Both are same. यस, आई थिंक कमेंट्री बॉक्स में सबने एनाकोंडा चोक बोला, बट इट इज डार्स चोक बेसिकली। Me and my knowledge about jiu-jitsu, bro. Seriously, I always have to go every time I write something or say something. I always have to recheck it बट on the net. क्योंकि मेरे हिसाब से डार्स चोक ही थी, बट राहुल भाई को ज्यादा मालूम होगा, ही इज अ जी जित्सु गाय। उन्होंने एनाकोंडा Yeah. चोक ही बोला था उस फाइट को, उस चोक को। लेट्स Mm. विल फिगर आउट Yeah. क्या सबमिशन था, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग एंड टू दैट फाइट मैन। एंड आई थिंक उस फाइट का प्रोटेस्ट भी हुआ था, फाइट खत्म होने पर मूसा ने Yeah. प्रोटेस्ट करा था उस फाइट को, बट आई थिंक रेफरीज ने इसे ओवररूल किया एंड विक्ट्री मिली क्लिंटन डी क्रूज को। And Clinton did well on the ground, bro. As soon as he secured that takedown, he didn't let go. I think this must be his fourth submission win, right? Fourth or third? Can you I please check? I think so, but the thing is, 5-0 का अनबीटन रिकॉर्ड है उनका, एंड ही स्टिल अनबीटन इन हिज थिंग। आई थिंक ये उनका थर्ड सबमिशन था। Mm. इससे पहले की जो उनकी 2 विक्ट्रीज हैं वो एक 2 डिसीजन से रही हैं, एंड जो Yeah. 3 हैं वो अलग ट्रायंगल चोक एंड सबमिशन से हैं। Yeah, लेट्स it मूव was ऑन देन टू, amazing. यस, योर क्लोजिंग कमेंट, सॉरी। Yes. Oh, you want my closing comments? Yeah. Yeah, I can see the future looks really, really bright for Clinton. I mean, from how he held Musa down yesterday. That Damn, was that amazing. that guy has a really, really good ground game, and he's not playing, man. He's not playing, and that guy is coming for the title. I think Definitely. in 1 or 2 fights, that guy is he's gonna be in a title fight. उन्होंने अंगद बिष्ट को ऑलरेडी कॉल आउट कर दिया है, देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। अंगद इज ऑलरेडी वन बाय द वे, स्पॉइलर अलर्ट। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास अगली फाइट थी श्याम आनंद और रिचर्ड बर्न्स के बीच में, एंड दैट विकेट स्माइल दैट यू कैन सी ऑन डॉनीज फेस, इससे पता चल जाएगा आपको वो किसका इंतजार कर रहे थे। आई Yeah, थिंक वी अगर किसी ने वॉरजो गाना सुना है, वॉर्डलो गाना सुना है, तो वी वांट वायलेंस, वी वांट वॉर, दैट इज व्हाट वी गॉट हियर। अमेजिंग exactly. स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस, श्यामानंद भाई, शाउट आउट टू यू। बहुत ही बढ़िया Yes. परफॉर्मेंस देखने को मिली श्यामानंद की तरफ से हमें। एंड जैसा कि प्रीव्यू शो में डॉनी ने कहा था, एक टेक्निकल ब्रॉलर और एक सबमिशन आर्टिस्ट के बीच में फाइट होने वाली है, सेम हमें देखने को मिला। बट द मैसिव डिफरेंस वाज द पंचिंग पावर ऑफ श्यामानंद। वाओ, क्या पंचिंग पावर हमें देखने को मिली! एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नॉकडाउन लिया 2 राउंड्स के बीच में उन्होंने, और तीसरा और चौथी बार इसकी जरूरत नहीं पड़ी जब एक विशियस, एक वायरल सेंसेशनल नॉकआउट हमें देखने को मिला है, जिसमें एकदम 180 डिग्री बॉडी टर्न हो गई मिस्टर रिचर्ड बर्न्स की। योर ओपनिंग कमेंट। Yeah, bro. What can I say, man? That was one of the fights like that I was really excited about because I'm a fan of Sham. I mean, you can say that I'm biased, say whatever you want. I don't really give a shit. I am a fan of Shaman and I like the kind of violence that he brings to the cage. Seriously, I really like the kind of violence that he brings to the cage. I mean, whenever I see stuff like that, right, I just go absolutely mental, bro, because I enjoy that stuff. But that, yeah,
I said it once and I say it again. Even yesterday, Sham was picking his shots. You know, he whatever Sham landed, right? Whatever Sham landed on Richard, it's not like, I'm not going to say that Richard didn't do well at all. Okay, he he was in the fight for as long as he was. He he didn't give up. He didn't give up, and he kept on fighting. He kept on fighting, and but Sham was just too accurate. Of course, Too superior. he went berserk. He went, but there was some moments where he went berserk, but it was controlled. It was really controlled, and whatever shots he landed, they were really clean, and and you could see the power, man. He got taken down, and Sham was like easily, like he easily got up, man. It was like that. I'm not staying down. I'm gonna get up. And wow, man, the ending to that fight, it was like, it was so clean. And the thing, the post fight Wait, speech wait, 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 was wait, even wait, wait. better. Wait, The post fight आएंगे आएंगे speech was even better. पोस्ट फाइट स्पीच पर आएंगे बट लेट मी टेल यू रिचर्ड बर्न्स ने टेक डाउन की कोशिश की 2 बार दोनों बार Yeah, इतना उसकी बिल्कुल टेक डाउन स्टफ किए शामानंद ने एंड बॉक्सिंग के बारे में तो आप बात ही मत कीजिए आउट बॉक्स किया है बिल्कुल फ्रॉम कैसे पिलर टू कोस्ट एस वुपिंग हुई है बिल्कुल रिचर्ड बर्न्स की सॉरी टू यूज द वर्ड रिचर्ड बट यही हमें देखने को मिला इस फाइट में एंड एक अटर डोमिनेशन दिखा हमें शामानंद का बट शाउट आउट टू रिचर्ड इतना ज्यादा पंचेस लेने के बाद भी वो एंड तक बने बहुत ही मुझे सेकंड राउंड में जब वो टेक डाउन से ले रहे थे बहुत ड्यूरेबल लगे रिचर्ड बर्न्स yeah, आई थिंक very durable. वेरी ड्यूरेबल एंड जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया है पोस्ट फाइट का प्लीज गो अहेड Oh man, I had a good laugh. I had a good laugh when he said, "Kohinoor kab he said, Kohinoor kab lauta हीरा rahe कब लौटाओगे हीरा कब लौट आई हो?" थिंक जब उन्होंने कहा हीरा कब लौटाओगे आई थिंक उससे पहले अगर वो कुछ बोलते तो ज्यादा दैट लाइन वुड हैव कनेक्टेड बट किसी को समझ नहीं आया हीरा कब लौटाओगे थोड़ी जब उन्होंने दोबारा बोला तब ऑडियंस को समझ में आया कि अच्छा ये कोहिनूर की बात चल रही तब देन एवरीवन वाज लाफिंग एट दैट जिनको जो जो हिंदी पाकिस्तानी लोग रहे होंगे वहां पर सबको समझ में आया होगा Yeah, no, that was a really cheeky post. I mean, the opening was really cheeky, but I ही इज अ mean, मैन फॉर कॉल आउट्स मैन एवरी फाइट के बाद कॉल आउट करते हैं absolutely. I've watched a few, not a few, like one podcast. Okay, with Shyamanand and Mr. देश with बंधु Coach G. Yeah, Sham he's very patriotic, so you can't take anything away from him. He said what he said. Don't feel bad about it. Don't feel bad about it. All of us, we went back. हम सबको हीरा वापस चाहिए. That's all. I mean, I may sound biased, but I'm also an Indian, right? एंड आई थिंक फाइट की जो एंडिंग सीक्वेंस थी उसमें आपको संजीत बुधवार की झलक देखने को मिली जो अपर कट जो बॉडी पंचेस लगाते हैं वो एंड राइटली हाईलाइटेड बाय मनन दत्ता शाउट आउट टू मनन एंड बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में भी सिंक्रोनाइजली सब बोल रहे थे कि ये संजीत बुधवार की याद दिला रहे जिस हिसाब से वो फाइट कर रहे थे एंड इसीलिए उन्होंने कॉल आउट करा है संजीत बुधवार को एंड में बिकॉज वी नो फेदरवेट टाइटल के लिए अगर कोई डिजर्विंग है एज ऑफ दिस मोमेंट that is Shyamanand Yeah, this is Sham's third victory, in a like row. straight victory, which he has like blown through his, like, he's just completely dominated his opponent, man. So if not Sham, then who? Tell me who. And Definitely. Sham has चलिए a point to prove as well, because in his pro debut, he fought Sanjeet, संजीत बुधवार and that was his pro debut. He fought against a guy who was much more experienced than him. And when he fought guys who are on his level, he showed. Who are on the same record as him. He showed that he's much better than them. I mean,
okay, maybe I'm blowing Sham's on, but do you feel that I'm wrong? Tell me, do you feel that I'm wrong? The Definitely, Sham has been fights that he fought after Sanjeet with guys who like same age, almost a similar age group, and like similar amount of fight records. Sham blew them over, man. It was like those बिल्कुल। अभिषेक नेगी के साथ, जैसा कि मैंने प्रीव्यू शो में कहा था, अभी इतना खून कभी नहीं निकला होगा किसी एमएमए फाइट में इंडिया में, जितना श्यामानंद और अभिषेक नेगी फाइट में निकला। कृष्णा हीर वाली फाइट में अटर डोमिनेशन, फर्स्ट राउंड स्टॉपेज उन्होंने लिया था। एंड उसके बाद रिचर्ड बर्न्स को जिस तरह से स्टीम रोल किया है उन्होंने, आई थिंक ही अपने पोस्ट फाइट स्पीच में वो बोलते हैं टाइटल के लिए, लेकिन आई थिंक अगर वो नहीं तो कौन, वो I think he deserves this title shot definitely. चलिए, definitely. And इस yeah, फाइट कार्ड I would like to implore Aisha ma'am and Alan Fernandez sir, please make this rematch. I would love to watch it again. I would love to watch it again. डेफिनेटली, होपफुली आपकी आवाज ऊपर तक जाए एंड दिस मैच वी सी एट MFN 11 होपफुली। एंड चलिए, इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक ऑल फॉरेनर फाइट थी, दोनों Yeah, फब्रिसियो ओलिवेरा ब्राजील के और उनके अगेंस्ट से अजीज बेक फ्रॉम किर्गिस्तान। फेदरवेट डिवीजन की फाइट थी, बहुत ही बढ़िया फाइट हमें देखने को मिली। फाब्रिसियो ओलिवेरा जो कि ब्राजील से आते हैं, उन्होंने पहले राउंड में बिल्कुल प्रेशर करने की कोशिश की, लेकिन अजीज बेक ने इसका एक बहुत ही बढ़िया तोड़ निकाला। उन्होंने जो अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का जो मुजाहिरा, जो प्रदर्शन उन्होंने किया है पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, 2 नॉकडाउन पहले राउंड में लिए। सेकंड राउंड में भी सेम सिचुएशन रही थी। थर्ड राउंड में थोड़ा बहुत आई थिंक वो थके हुए दिखे हमें, और फाब्रिसियो ओलिवेरा ने थोड़ा सा उन्हें प्रेशर करने की कोशिश की, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोस टू फाब्रिसियो मैन। फाब्रिसियो ने जो गुर्दा दिखाया है, जो उन्होंने गट्स दिखाए हैं, बिल्कुल प्रेशर करना इवन आफ्टर दोस नॉकडाउन्स, दैट वाज रियली कमेंडेबल, ऑन हिज पार्ट। योर कमेंट? I would like to say this. Okay, when that fight happened, I was so annoyed with the man. It was so sweaty and so slippery. दोनों फाइटर फिसल रहे थे यार. You saw that shit, right? एंड आई थिंक Damn, it was, अजीज बेक ने 3-4 बार इशारा किया इस चीज को, एंड yeah. रेफरी को बाहर से सपोर्ट बुलाना पड़ा मैट साफ करवाने के लिए। I was so annoyed. I was so pissed off with those people also who were cleaning. I mean, what kind of job were they doing? I don't know if it's their fault or some sort of problem with the man, but I mean, stuff like that it shouldn't happen. आउटडोर But फाइट्स में ऐसा होता है, जब आउट इसीलिए यूएफसी कभी आउटडोर फाइट्स नहीं रखती है। आउटडोर फाइट्स में ये चीजें होती हैं। या and Dubai is a pretty hot place, so can't help it. But yeah, let's talk about the fight. I was quite surprised that that Fabrizio, like, he tried his takedowns only in the final round, and that too towards the end. The आखिरी 1 Not मिनट में just me, even the commentary team, they were saying, like, why isn't he using his ground game? Why isn't he using his ground game? Okay, I mean, I'll say that this guy Aziz Bek, he was defending well, and but more than that, Aziz Bek he, he made that fight his. Like, he kept it standing, and the knockdowns that he got, they were really crazy. And you can see, man, the level of striking is really different. That Aziz Bek, he was showing off. He was showing off. And then um I just also want to add another thing. Okay, you really have to credit the chin of Fabrizio, man. Despite getting knocked down like that, like 2-3 times, that guy still stood up, kept on fighting. I mean, you have to respect that. So डेफिनेटली। what? चलिए इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं, और इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हुए जो हमारे पास फाइट है वो है
जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था, जोजो राजकुमारी, कोबरा क्वीन, और उनके अगेंस्ट थी द कैट वुमेन प्रिया शर्मा। व्हाट अ Yeah, man. ब्यूटीफुल फाइट, व्हाट अ ग्लोरियस वायलेंस जो हमें देखने को मिला इस फाइट में, खासकर पहले राउंड में। सेइंग समथिंग? Yeah, exactly. That was a battle of up and coming prospect against a girl. I mean, against someone who has experience. And Priya showed her experience last night. Jojo was going crazy, especially in the first round. But you see Priya's composure. She was so calm Amazing. throughout the entire fight, and she used her counters really nicely. She used her counters really nicely, and to top all that, she used her ground game really well. I mean, you could see, right, the difference, especially in the ground game. Yeah. Can you see me? Yeah. Yes, I can. I can. So yeah. So yeah, you could see the difference in the ground game. That ground game, it was a game changer for Priya. Yeah, but I'm not saying. I mean, I don't. I mean, by saying that, I don't mean that you know Priya striking is bad or lesser than Jojo's, but that she was much more better on the ground. Oh, Amit. या या सो जैसा कि जैसे कि आप बता रहे थे, आई वुड लाइक टू फर्दर दिस पॉइंट। पहले राउंड में क्या एक्सप्लोसिव जोजो देखने को मिली है, कोबरा क्वीन एट इट्स बेस्ट, Yeah, with the front she is very kicks, with the high kicks, जो मुई थाई kicks जो वो लगा रही थी, आई मीन आई वाज सुपर थ्रिल्ड। मुझे लगा ये फाइट या तो बहुत जल्दी एंड हो जाएगी, या हमें 3 राउंड का एक और देखने को मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट वी विटनेस्ड। मजा आ गया था पहले राउंड के बाद। तो दोनों लेडीज अमेजिंग स्किल्स, एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू प्रिया शर्मा। इतनी बढ़िया इतने बढ़िया अटैक होने के बावजूद आगे बढ़ रही हैं, प्रेशर कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, प्रेशर कर रही हैं, चिन पे उनके लग रहा है, उनकी बॉडी पे पंचेस लग रहे हैं, किक्स लग रही हैं, और वो आगे बढ़ रही हैं। और सेकंड राउंड में तो ये सेकंड और थर्ड राउंड में तो आई थिंक शी हंटेड डाउन जोजो। yeah, आई exactly. थिंक ऐसा लगेगा, टू पिक योर वर्ड्स, आई एम ब्लोइंग प्रिया हॉर्न। सेकंड और थर्ड राउंड में शी हंटेड फॉर जोजो, एंड जोजो वाज ट्राइंग टू एस्केप विद सम कॉम्बिनेशंस ऑफ हर। लेकिन Yeah, जोजो ने सेकंड राउंड में आई थिंक, सॉरी नॉट सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में थोड़ा सा हमें गैस आउट दिखी। yeah, लेकिन उसके बावजूद उन्हें काउंट आउट आप बिल्कुल नहीं कर सकते, जिस हिसाब से उनकी पंचिंग पावर है, जो उनका सेंसेशनल वायरल नॉकआउट हमने एमएफएन में देखा था, बिल्कुल उसी तर्ज पे गेम चल रहा था। मुझे लगा ही था कि आखिरी राउंड में जोजो अपने नॉकआउट पावर के लिए जाएंगी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। लेकिन कुडोस टू प्रिया शर्मा, जिस हिसाब से उन्होंने हंट डाउन किया जोजो को, और आई थिंक फाइट खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट एवरीवन एक 29-28 का स्प्लिट डिसीजन में, आधे लोग जोजो की तरफ थे, आधे लोग इस तरफ थे। लेकिन आई थॉट दैट जो भी ये फाइट जीतता, इट वुड हैव बीन अ वर्दी विनर फॉर दिस फाइट। no, yeah, you're right. And for me, I think Priya is the winner. She deservedly is the winner because, yeah, how she performed throughout the entire fight. I mean, if I was the judge, I would, I would like for sure give the fight to her. And one more thing, like I'll just add, Priya, I feel like she had a proper game plan, and I believe Jojo had too. But Priya was very, very calculated. She was taking her time, taking it slow, like how she implemented each and everything in that happened in the fight. It was really really calculated. Like, okay, I mean, sure, Jojo was landing some shots as well, but so was Priya, right? And even on the ground also, she did really really well. And like I said, like her ground game was a game changer. And yeah, I believe that particular, I mean, particular aspect of the fight, it was the, I mean, it was the one that that got the win in her favor. स्लाइटली डिफरेंट में बोलना चाहूंगा। आई थिंक सेकंड राउंड में भी हमें बहुत बढ़िया स्ट्राइकिंग देखने की को मिली थी जोजो की तरफ से, लेकिन अगेन स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री उन्हें गई है। और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस फाइट के बाद, आई थिंक नॉट आई थिंक शी ट्रेन्स विद स्टैम्प फेयरटेक्स। आप अगर मुई थाई की क्वीन के साथ फाइट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके गेम में वो मुई थाई का जो
स्टांस होता है जो आपको देखने को जरूर मिलेगा, एंड वही चीज हमें देखने को मिली प्रिया के गेम में। आई नो इस बार उनकी ट्रेनिंग वॉरियर्स कोव में हुई है, शाउट आउट टू वॉरियर्स कोव, लेकिन लेकिन उनका जो बेस है मुay थाई का, किक बॉक्सिंग का, स्टैम्प फेयरटेक्स और फेयरटेक्स ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेन करने के बाद बहुत ही एक आई थिंक थोड़ा सा लेवल हमें अलग देखने को मिला, बिकॉज आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करने के बाद आपको एंड्योरेंस और उसका फैक्टर आ जाता है, तो वो हमें शायद थोड़ा सा देखने को मिला। लेकिन कुडोस टू बोथ द लेडीज, एक बहुत बढ़िया अमेजिंग फाइट हमें देखने को मिली। Yeah, exactly, bro. And I also want to say that yesterday, Catwoman versus Cobra Queen, right? Billy versus Sam. Billy, सरप्राइजिंगली I'm यस। not surprised. इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं, एंड अगेन देहरादून के म्यूटेंट एमएमए एकेडमी के अंगद बिष्ट फ्लाईवेट टाइटल के लिए फाइट कर रहे थे अगेंस्ट इजिप्ट के मोहम्मद गमाल के साथ, दी एग्जीक्यूशनर मोहम्मद गमाल के साथ। एंड आई वुड ओपन द फ्लोर टू यू फॉर द फर्स्ट कमेंट। Oh man, that executioner was going from the kill right from the get-go, bro. You saw his combinations. It was crazy, man. He was hands and legs and this and that. Like his striking was on point Elbows. yesterday. And elbows and all that, right? He was flashy as hell. And he looked so confident till the end of the second round. But So I'll tell you cocky, this. not even confident, बहुत ज्यादा cocky दिख रहे थे वो, and I Yeah, think yeah. that led to the downfall. That led to the downfall. तो अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ इस पे, तो अंगद फाइट की स्टार्टिंग में अंगद ने कुछ अच्छे पंचेस कनेक्ट किए, लेकिन उसके Yeah, बाद yeah, से आई थिंक मोहम्मद गमाल ने एक कुछ अलग ही एंगल से पंचेस, एल्बोज और किक्स लगानी शुरू की। लिवर किक उन्होंने 3-4 बार लगाई, जो मुझे बहुत ज्यादा फेल्ट हुई कि मैंने कहा लिवर किक लगा रहा है ये बंदा, लेकिन बावजूद इसके बहुत ही कॉकी हो गए थे आई थिंक वो थर्ड राउंड में। एंड आई थिंक सेकंड राउंड के बाद, तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड मुझे लग ही रहा था यार ये फाइट कब ग्राउंड में जाएगी, कब अंगद जीतेगा, कब फाइट ग्राउंड में जाएगी। एंड इवेंचुअली थर्ड राउंड में वो टेक डाउन उन्होंने लिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। या गो अहेड। yeah, exactly. And in the first and second round, I was really worried for Angad. Obviously, he's our own guy, right? He's our countryman, right? So I'm not disrespecting Gamal or anything like that, but I'm just saying it as it is. या You know, गो obviously अहेड। support your own countryman, right? So, but yeah, I felt like the fight was going his way. Like I was very worried. Okay, but you could see that Angad, like one thing that Angad showed yesterday was composure. Sure, Gamal was landing left, right, and center, back, up, top, down, low, and all that. But but Angad, he was really, really patient. He landed a few good shots. It's not that the fight was like one-sided. Okay, the volume that Gamal was throwing was crazy. It was crazy. I think that was the reason why eventually he gassed out. I felt like in the third round he gassed out, and that was how Angad got a small whiff of that, and he started putting on the pressure. And as soon as the fight went to the ground, you could see the difference in levels, especially in the ground. Angad had to weather that storm, and he did well. He really, really weathered that storm. Imagine he ate so many liver kicks, and his leg, it was battered, man. The color of the skin really changed, right? Yes. But kudos to him. He stood there. He stood there with, he took all that, and as soon as he saw one small opportunity, and he turned the whole fight on its head, and he finished that fight in spectacular fashion. I knew it as soon as that fight went to the ground, right? बिल्कुल। It was over. It was over. Because Angad is strong, man. You can see the guy has fought not just in flyweight, he's fought in bantamweight and featherweight and all that, right? And the power difference is crazy. The level of grappling and wrestling, you could see Angad had the edge in that. And you were right. Just like you, I was also waiting when will this fight go to the ground. डेफिनेटली। एंड फाइट में एक फैक्ट मेरे को याद आया कि लगातार चौथी जीत है अंगद बिष्ट की, और लगातार तीसरी रियर नेकेड चोक विक्ट्री।
पिछले 3 ओपोनेंट हिमांशु कौशिक, आज कल मोहम्मद कमाल और उससे पहले चैतन्या गावली, तीनों को रियर नेकेड चोक से सबमिट किया है। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है उत्तराखंड के, हम सब लोगों के लिए, देहरादून के लिए, इंडिया के लिए, कि हमें एक फ्लाईवेट चैंपियन मिल गया है एमएफएन का, मैट्रिक्स फाइट नाइट का। एंड आई थिंक नाउ डबल चैंप स्टेटस के लिए जाना चाहिए उन्हें अगेंस्ट उलूमी। अंगद बिस्ट हैज टू गो फॉर डबल चैंप स्टेटस। आई Yeah, फील I सो। would like to see that. Yeah, I would like to see that too, for sure. Because Angad has the skills and the power to, I mean, and yeah, he can easily make bantamweight, for sure. Aram say he's fought there before, and if he can make flyweight Aram, I mean, he looked very comfortable yesterday, despite eating all those. It didn't look like he was gassing out or anything like that. He was patient, and he was taking all those and returning like every now and then. As soon as he saw any sort of opportunity, like opening up, he was returning. But I like his concent. I feel like he was very very concentrated in that fight yesterday, and damn man, did he end that fight in a spectacular way. And डेफिनेटली। I believe now Angad is the number one fighter in Southeast Asia, right? In South Asia or Southeast Asia. I saw it yesterday in Tapology. Can you यस, please just नहीं check? वो तो फ्लाईवेट डिवीजन में पहले से ही नंबर 1 रैंक कंटेंडर थे, पहले से ही थे वो तो फ्लाईवेट डिवीजन। So it's a matter of another pride. another fact for pride, and I think right now अब उत्तराखंड में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए द गवर्नमेंट और some bodies have to, some statutory bodies, इनको आना पड़ेगा अब तो। जिस हिसाब से हमारे लड़के वर्ल्ड लेवल पे जाके टूर्नामेंट जीत रहे हैं, यूएफसी में जाने वाले हैं अंशुल, एमएफएन टाइटल ऑलरेडी दे चुके हैं, दिगंबर फेदरवेट के लिए टाइटल के लिए बोल रहे हैं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट से कुछ सीख लेकर उत्तराखंड में हमें कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ Now स्टैट्यूटरी बॉडीज को आगे आना चाहिए। it's going really fast, and we have like good foundations for combat sports and MMA in India, man. There's so many good fighters from all over the country with different kinds of fighting styles, whether they go for kickboxing or wrestling or MMA. We have fighters. We just need proper infrastructure and coaching and facilities and obviously money funding. डेफिनेटली। So yeah. चलिए फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं, एंड को मेन इवेंट में हमारे पास फाइट थी ध्रुव चौधरी और उलूमी करीम, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बैंटमवेट टाइटल के लिए। एंड मच टू बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलना पड़ रहा है, उलूमी ने नॉकआउट किया ध्रुव भाई को, एंड उलूमी इज द बैंटमवेट चैंपियन right now in MFN. Your opinion? Why do you want me to make these opening thoughts, man? But yeah, honestly speaking, congratulations to Uloomi, and he was very respectful even after the fight. He has always been. He has always been respectful. Yeah, he's one, like, I mean, he's one of. इससे जस्ट अ फैक्ट, इससे पहले भी 2 बार वो इंडिया पाकिस्तान फाइट कर चुके हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में। फर्स्ट फाइट आई थिंक अगेंस्ट सतीश, नॉट श्योर ऑफ द गाय, बट उनको हराने के बाद फरहाद ने उन्हें पिछले ब्रेव के एक कार्ड में नॉकआउट किया था। तो 1-1 के रिकॉर्ड के साथ वो इस फाइट आ रहे थे। एंड उलूमी, जैसा कि अगर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, ही इज बहुत ही यूनिक बंदे हैं वो। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, बाल्टिस्तान से आते हैं, एंड आप उनकी पर्सनालिटी देखो तो अगर पाकिस्तानी हटा दो उनके आगे से, तो ही इज अ वेरी, आप उनसे इंटरेक्ट करने की जरूर कोशिश करो। ही इज सच अ वंडरफुल गाय, बहुत ही बढ़िया। गिटार बजाते हैं, गाने गाते हैं अपने इंस्टाग्राम लाइव्स पे वो, एंड साथ में एक बहुत ही कैरिस्मेटिक, एंड ऑन द माइक स्किल्स हमने देखी ली उनकी कल क्या थी। एक पीस का मैसेज उन्होंने दिया, लेकिन जो नॉकआउट उन्होंने लिया दैट वाज विशियस। लेट्स टॉक अबाउट
दैट फर्स्ट एक Yeah. ध्रुव चौधरी स्टार्टिंग से एक थोड़ा सा रेंज मेंटेन करके चल रहे थे फाइट में, लेकिन Yeah. लेकिन थोड़ी देर में मुझे लगा कि थोड़ा सा रेसलिंग हेवी गेम रखेंगे उलूमी, लेकिन उलूमी ने आई थिंक 2 बार रेसलिंग के टेकडाउन की कोशिश की और तीसरी बार टेकडाउन लेने से थोड़ा-सा ऊपर ही पिक किया और एक नॉकआउट पंच मारा। एंड आई थिंक द फर्स्ट पंच ओनली डिड द डैमेज। फर्स्ट पंच इनफ था नॉकआउट के लिए। जो बाकी के पंचेस से दैट वाज़ अननेसेसरी बट as they say, it's a hard until the referee stops you, you have to go on. And इस तरह bantamweight चैंपियन एमएफएन के उलूमी करीम दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही उनकी एंड आई होप टू सी यू सून इन एमएफएन केज अगेन. If you like, I feel bitter about the result. Okay, yesterday. I mean, obviously, we're playing against a rival nation, right? But if we take that Pakistani thing aside, like, and yeah, I agree with you. He's a very, very good person. I believe they are good people all over the world, man. I mean, डेफिनेटली yeah, पीस obviously, थ्रू right? स्पोर्ट्स सन उन्होंने एक स्लोगन दिया था. Exactly. That was that. That's a that was very, very good. That was like, despite the, I mean, apart from the thing from the knockout, that was another thing that was the highlight of the fight. I mean, you could see the guy was very well spoken. He was very calm. So his overall his attitude before and after the fight. You have to give respect to that person, right? I mean, as bitter as we feel as Indians losing to a rival nation, okay, especially in sports and the sports that and the particular sport that we love, but we should show our respect where respect is due, right? But yeah, I mean, I felt like Dhruv started well. He really, really started well, and he was putting in the pressure. And in the stand-up game, I felt like Dhruv was winning. Initially, I mean, as the fight started, I felt like Dhruv was winning. But damn, that bloody slam! You saw that shit, right? My God, man, शेड्स ऑफ हमजा चिमाय Habib Nurmagomedov. when I saw that shit, I was grabbing my head and I was like, damn, what the hell is Dhruv gonna do now? But thankfully, like, like somehow, like in the scramble, I mean, despite the, Uloomi putting on the pressure, Dhruv, like, Dhruv defended well. And I felt like at that moment of time, because of the two takedowns, Dhruv was like, his attention, like he was paying attention to the Definitely. takedown. And Uloomi changed that shit and knocked him out, man. And I feel bad for Dhruv, I mean, I mean, India versus Pakistan is no joke, right? I'm sure he must have gone to the fight with a lot of pressure, man. Imagine the pressure he must have had on his head, right? Shit, I feel bad for him, but this is a fight game. I mean, okay, me and you, we are not fighters. We are only fans and lovers of the sport. But yeah, I feel bad for Dhruv, not only because he lost, but because of the mental. Like, it's no joke, bro. Like when you play, I mean, when you have to go against a rival nation, that I mean, that kind of that kind of pressure is different. It's really, really different. And I hope that he's not being too hard on himself. And on top of that, like he missed, I remember he missed a few, like he missed weight by, I mean, he missed weight by few grams. Right? How many? Not sure of that, but we don't have the proper facts. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. Yeah, that is all, bro. I don't want to say much about this particular fight. Obviously, I still feel a little bit salty. आगे बढ़ते हैं द मेन इवेंट एंड आई थिंक मेन इवेंट के बारे में बताने से पहले वन थिंग मैं बोलना चाहूंगा ध्रुव भाई के बारे में कि ध्रुव भाई हैज बीन अ वेटरन ऑफ Yeah, इंडियन एमएमए exactly. में 2012 से उनको देख रहे हैं एंड एसएफएल के टाइम से उनका जो रुतबा है वो बड़ा हुआ है. उन्होंने सुमित भाड़े से लेकर जितने भी मतलब इंडियन एमएमए स्पेस में जो
फाइटर्स है, सबके साथ फाइटर की फाइट सबके साथ फाइट की हुई है yeah, उन्होंने, तो बहुत ही बढ़िया नाम है उनका इंडियन एमएमए में। yeah, लेकिन कहते हैं कि अ अ, उन्होंने इस फाइट के लिए वो एमएफएन रिंग में भी फॉलो आउट किया था। yeah. नॉट फॉर द सेम फाइटर बट एक पाकिस्तानी फाइटर के लिए। आई थिंक उनका अगर प्री फाइट आपने देखा होगा तो उन्होंने बोला था मुझे वो फाइट चाहिए। तो ही इज दैट काइंड ऑफ गाय। साइको उनका निकनेम है तो मे बी यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट आई होप द वेरी बेस्ट फॉर ध्रुव भाई एंड गेट वेल सून ध्रुव भाई। चलिए इस And फाइट कार्ड में आगे no, no, hold on. One more thing. Okay, I mean, I don't think Dhruv is even 30, right? And he's been in the fight. He's been in the fight game for so long since the SFL days, and I don't. I mean, correct me if I'm wrong, but I don't remember any MFN card that where Dhruv is not there. So the guy has been in the sport for so long. He's a pioneer of the sport. He's been a pioneer of the sport from such a young age. So this guy deserves nothing. I mean, whether he wins or loses or anything, he deserves nothing but our respect, man. That's all. डेफिनेटली 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 या चलिए फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं मेन इवेंट की। संजीत बुधवार और किर्गिस्तान के आताबैक आब्दिमुतालिपोव एंड पूरा फाइट कार्ड बहुत बढ़िया रहा। मेन इवेंट फेदरवेट फाइट के लिए था, एमएफएन टाइटल फॉर द फेदरवेट डिवीजन एंड संजीत बुधवार और आताबैक की फाइट देखने को मिली। पूरे 5 राउंड गई ये फाइट। एक how to put in good words, एक I won't say a domination, but uh, let me not sugarcoat it. Johnny, please go ahead. No, no, you tell me how you feel. I'm not gonna start. You tell me how you feel. Honestly बोलूँ तो मुझे मेन इवेंट में वो मजा नहीं आया, क्योंकि 11 फाइट में एक्शन पैक्ड एडवेंचर देखने के बाद, एक एक्शन पैक्ड फाइट नाइट देखने के बाद मेन इवेंट से होता है ना कि मेन इवेंट लास्ट होता है। और बहुत उम्मीदें थी मेन इवेंट के साथ, एक नॉकआउट की उम्मीद कर रहे थे संजीत बुधवार से, लेकिन वो हुआ नहीं। अजीज बेक काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला। संजीत बुधवार ने हालांकि उन्हें हराया, फेदरवेट चैंपियन बन गए हैं वो इंडिया के, लेकिन फाइट में उतना मजा नहीं आया। एंड आई थिंक हर चैंपियन की एक फाइट में ऐसा होता है। इजराइल आदेसाने के साथ बहुत बोला जाता था ये, तो इट वाज काइंड ऑफ इजराइल आदेसानिया defending a title performance. Hmm, okay. I'll tell you again. That fight was slow, but I wasn't like I was not disappointed by it. I told you yesterday also. We can't always get a perfect card, right? But honestly speaking, I wasn't really disappointed by it at all. I liked that fight. I felt like both fighters they respected each other's skills. Like this guy, what's his name? Atabek. So he definitely acknowledged Sanjeet's power, and even Sanjeet also he acknowledged his wrestling skills. And you saw that one particular round where Atabek got Sanjeet to the ground, he held him there. So yeah, so and Atabek he was not willing to get too close to Sanjeet. Sure, Atabek was a longer guy; he could have used his jab and all. But did you notice? I'll tell you. Okay, just two things. Sanjeet's movement, na, it's always been very, very awkward. You know, it's always been very, very awkward. And yesterday, Especially that leg kick देख के बहुत ही अचंभा हुआ। I was surprised yeah, with that. even the leg kicks are also like very unorthodox type. And the movement was also very awkward. And to add all that, yesterday he was showing head movement and all. You see, like he was moving his head really, really well. On top of that, there was an awkward movement. So Atabek couldn't even implement his jab. Like he was a taller guy, he had a longer reach for sure. We can that's a fact, right? But he couldn't do any of that. And Sanjeet was landing and throwing jabs to the body and trying to land his signature punch and all. But yeah, like both of the fighters they showed really good movement. But I enjoyed that fight for I mean for the
for the kind of pace that it was in. I mean, I myself, I really enjoyed that fight. Like I was writing down stories. Okay, okay, okay. This is what's going on. अगर आपने And फाइट की कमेंट्री सुनी होगी तो आई थिंक जो हमारे थर्ड कमेंटेटर हैं गैमएफ के जॉन बुक्स कोच, yeah, आपने सुना होगा तो कोच वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उनका जो right, वाइड स्टांस है और वो हाथ नीचे करके जो आगे बढ़ते हैं, कोच बुक्स वाज रियली रियली annoyed with that. yeah, And I think बहुत बार कोच ने ये भी कहा कि I should be in that corner, I should go for that for the break because you know लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर फाइटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अ, yeah, वो जो मूवमेंट थी that was really annoying for Atabek for yeah, you know uh, I think एक टेक्निकल फाइट देखने को मिली इसमें दोनों अपने फाइटर की टेक्निकल स्किल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पहले दूसरे तीसरे राउंड में बॉडी बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हालांकि इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ फोर्थ राउंड में, आप अगर बॉडी पे हर्ट करते हैं अपने ओपोनेंट को तो लेटर राउंड्स में उसका फायदा मिलता है आपको कि सामने वाला गैस टैंक में लो हो जाता है, सामने वाला गैस टैंक कम हो जाता है, थकावट होने लगती है उनको ज्यादा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अगेन अजीज तक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की इस बात पे। yeah. But you have to appreciate the kind of style that Sanjeet brings to the, to the team. डेफिनेटली See, it's not something that we see every day, and for some people, they won't understand. It'll be like, what kind of fighting style is this? But when you see the kind of movement that he showed yesterday, not just body movement, head movement, even the leg kicks, they were awkward as hell, man. They were like, wow, what the hell is that? It's like somebody stepping in on a puddle or something like that. But you know, they were awkward but effective, I'll say. I mean, even the head movement and the body movement, they were very, very effective. They threw whatever he did, they like made Atabek think twice, right? They're like, okay, I'm not gonna be like that with this guy. But yeah, एंड whatever he did, it was effective, man. He got him the victory. At the end of the day, victory is what matters, right? Even if डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस टू संजीत बुधवर फॉर द फाइट he was looking for the फॉर द knockout. He विक्ट्री। was looking. It's not like Sanjeev wasn't looking for the knockout. Okay? He was looking for the knockout. He was throwing like these little combos here and there, trying to land that knockout punch. But unfortunately, he couldn't land. But it's okay. At the end of the day, he won. So congratulations. Silent डेफिनेटली killer. एंड जैसा कि हमने प्रीव्यू शो में कहा था कि मे बी एक टेक डाउन हेवी गेम हो सकता है आताबैक का, इसकी कोशिश की थी उन्होंने पहले दूसरे राउंड में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए वो पहले 3 राउंड में। चौथे राउंड में दैट फटीग फैक्टर कम्स इन, तो वहां पे उनको थोड़ी सक्सेस मिली रेसलिंग में जिसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वो, एंड इवेंचुअली इंडिया के पास फेदरवेट किंग मिल चुका है, दैट इज टैलेंट किलर संजीत बुधवार, close to the whole card, all the fighters जिन्होंने fight किया। Any closing comment on the fight? Yeah, that card delivered, bro. It delivered right from the prospects to the guys who are experienced. It delivered big time, man. And I'm so happy. I'm so happy to see a card like that. Like even the fight between this guy Oliveira versus Satbaliev, even that one also delivered. And even the fights, the fight that happened between guys like Arsenba who are on, who just made their pro debuts or 2 fights into their pro career. Those fights also they delivered, man. Like Alan sir, he did a really good job of matching, fighters according to their respective levels. Kudos That to is the the whole kind of MFN team. yeah, exactly. But the only thing that annoyed me was just the slippery surface, man. That's it. Slippery mat. Yeah, and that whenever I saw fighters slipping, I felt like shit. I should have been there. Wiper leak it, clean that shit up real fast. Again, जितना भी थैंक यू बोले MFN टीम को उतना कम है। MFN टीम थैंक यू एलन सर, आयशा मैम एंड द होल MFN टीम। बहुत बढ़िया इवेंट हमें देखने को मिला। MF टीम थैंक यू
एक बहुत बड़े इवेंट हमें देखने को मिला, मजा आया इवेंट देखने में हॉटस्टार का, जिन्होंने इस इवेंट को Even the commentary team did really well. So इवन shout out shout out to Rahul bhai, shout out to Manan bhai, Coach Hook and Hotstar as team well. for bringing this really amazing fight night to us. Yeah, yeah, man. Yeah. Ah, I I really, I mean, yeah. What else can I say, bro? I was really happy with that card yesterday. But then again, any fight makes me happy. ठीक है. Any fight of the night for you? Fight of the night for me. What was yours? You tell me. I was really, Digamber, Akib and Jojo, Priya Sharma. इन दो में से कोई एक जिसको भी मिले, I'll not complain. इन दो में से किसी एक को भी दे दो. I think Akib and Digamber because दोनों ने एक दूसरे को मैच किया from start till end. For me, performances of the night definitely goes to Sham and Clinton. Like, because they did really well in their respective fights. ICSA boys, Bangalore bias. ICSA. I can smell some Bangalore bias here. So yeah, I felt like they had really standout performances, and so did Avizo. He did really well. Those three for me were performances of the night. Fight of the night. Which fight was the most competitive? Maybe Digamber versus Akib, bro. Akib. Yeah, that one was very competitive. And or maybe Angad versus Gamal. Definitely. So guys, that's a wrap. Thank you. Yeah, तो let's देखने wrap it के up, लिए. bro. Yeah. Even I have So to guys, leave my office. that's a wrap. बहुत ही बढ़िया इवेंट हमें देखने को मिला. Kudos to the whole MFN team. Thank you, Donny, for joining in the show. And Yes, and thank you for having me, my friend Amit. And yeah, from me and the One Dojo team, love you all, Indian MMA fans. and the whole wider Indian MMA community बोलना चाहूंगा, अब नहीं तो कब भाई, अब नहीं तो कब देखोगे MFN, जब हम Yes. 100 शो कर रहे होंगे तब आओगे पीछे, या UFC में ही बिजी रहोगे. गाइस कम ऑन, हमारी MFN ट्रेन में बैठो, शेयर करते हैं थोड़ा आगे तक. So guys, that's a wrap from me and Donny. Thank you तो हमारे साथ जुड़ने के लिए. Appreciate your time and हम आपको मिलेंगे अगले Friday with another show. Thank you. Take care. Bye.